अस्सलाम वालेकुम. Hello to all of you. क्या हाल है आप सबका? So the question for today is कि why we breathe, why it is crucial for a living being to breathe. So any one of you who knows the exact answer, who knows the reason of it, what is the actual purpose of breathing? So we all breathe. In 1 minute, we almost take 12 to 20 breaths, but most of us never got to know what is the actual reason behind breathing, why it is crucial for life. So, anyone who knows the answer, why we breathe. So, any one of you who knows the reason behind breathing, why we inspire and expire. हम 1 मिनट में ऑलमोस्ट 12 to 20 ब्रेथ्स लेते हैं, but I think 90 to 95% of the people around the world are not aware of the reason behind breathing. हर किसी को पता है ऑक्सीजन Hello Talha, how are you? Hello everyone. Hello Talha, how are you? So anyone in the stream who knows the answer, why we breathe? कितना सिंपल क्वेश्चन है. For what we breathe, why it is necessary for a living being to breathe. So no one in the stream knows the answer. आप लोगों की क्या अवेयरनेस है, क्या थॉट्स हैं, जो भी आप लोगों को लगता है, यू गाइस
can comment your thoughts. Hello, Maria. So, what do you guys think? What could be the reason behind this? Why we breathe? हम ऑक्सीजन लेते हैं विद इंस्पायरेशन एंड हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं विद एक्सपायरेशन. और ऑक्सीजन so we can live. Yes, we inspire, we breathe so we can live. So why it is necessary for a living being to breathe? Lungs need air. No breath out, no air. Die, breath out carbon dioxide. Hello, Tango Mangle. You are partially right. Not just the lungs which needs oxygen. Every organ of the human body needs oxygen. So we inspire. हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. That goes to the lungs, and from lungs it goes to each and every organ of human body. But वो ऑक्सीजन क्यों रिक्वायर्ड है? What is the purpose of oxygen? Tango Mangle, what is the purpose of oxygen which we inhale? Why it is necessary for us to take that oxygen? Yes, we need to get rid of carbon dioxide because it is toxic, but we also breathe to get oxygen. Carbon dioxide in excess can lead to drowsiness and ultimately to the respiratory center depression. So we can no longer take more breaths if carbon dioxide level gets high enough. That is called type 2 respiratory failure. But what is the purpose of oxygen? Why we inhale? Why we take oxygen with each breath? Why we require this oxygen? Hello, Ward Helali. You are right. We need to breathe to live. But why it is necessary? Why we need oxygen? The question is quite simple. Why we need oxygen? हमें oxygen क्यों चाहिए? What is the purpose of oxygen? What is the purpose of breathing? जिंदा रहने के लिए तो चाहिए. Yes, every organ in the human body needs oxygen. Oxygen आपके lungs में आती है. Then through the blood supply it goes to the left side of the heart. और फिर हार्ट से ट्रांसपोर्ट करता है टू ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. बट जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन क्यों चाहिए है? अगर हार्ट को भी चाहिए, लंग्स को भी चाहिए, वाई दे नीड ऑक्सीजन? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दैट ऑक्सीजन? ये तो आप बता रहे हैं जैसे हर किसी को पैसे चाहिए. सो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? आपको पैसे क्यों चाहिए? आपने गाड़ी लेनी है, घर लेना है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? ऑक्सीजन क्यों चाहिए?
Okay, great. Hello at the rate xxtrons. How are you? यस यू आर राइट. सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए. सो आपकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, विच इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग, दे नीड ऑक्सीजन. यस, आप टेंगो मैंगल, आप बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं अब. सो हम ऑर्गन से सेलुलर लेवल पे आ गए हैं कि आपकी बॉडी के सेल्स, दे रिक्वायर ऑक्सीजन. एंड यस, इनसाइड द cells there are the organelles, and one of the organelles is mitochondria. It takes nutrient from food. Yes, Tango Mangle, बिल्कुल. So the food breakdown products goes into the mitochondria. The glucose break down into acetyl CoA and then pyruvate, and then further breaks down. Yes, bilkul Tango Mangle, you are right. So that food which we eat breaks down into glucose, and from glucose it converts into glucose, so it converts into acetyl CoA, then into pyruvate, and then that pyruvate in the mitochondria. There is a cycle called Krebs cycle. So the end product of that Krebs cycle is ATP production. And once ATP is formed, there are the electrons, and there is the hydrogen, and there is the oxygen. So that oxygen and the electrons and the hydrogen, they combine together to form water. Yes, you are right. So the waste product of the plants is oxygen, and the end product or the waste of human body is carbon dioxide, which we expire, and that carbon dioxide is utilized by the plants. So we both depend on each other. Yes, Tango cells. So now you got the answer. Very well said. So this was the reason behind breathing. So now you know how complex human being is. This is the creation of God. जब आप इतना एक सिंपल सा जो आपका कंसेप्ट है इसको स्टडी करते हैं, यू गेट टू नो कि अल्लाह ताला ने कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ बनाई है, और कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अल्लाह पाक ने
एक इंसान के अंदर रखी हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई एम गुड, आप कैसे हैं? यस, टेंगो मैंगल्स। इट इज़ बेसिकली टू एजुकेट, दिस इज़ एन एजुकेशन चैनल। तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट्स हैं जो कि आई वांट एवरीवन टू लर्न। बट दैट इज़ ग्रेट ना, यू गॉट टू नो, you researched, you studied, and now you know. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? That is great, Tango Mangles. May you succeed in whatever you are doing. May Allah gives you success. I hope you do great. Okay, Tango Mangles, thank you so much for joining me, for being with me. Take care. Goodbye. See ya. Allah Hafiz.